Okay, so let us start. So here the first thing we are having is the three terms in AP, consecutive terms. Now what is the meaning of that? Yesterday I have explained एक के बाद एक term. For example 4 है तो 4 का consecutive term क्या है? The next term, that is 5. So एक के बाद एक term जो होता है उसको बोलते हैं consecutive terms in AP. So here the first term we will name it as T1, the second term will take it as T2, the third term will take it as T3. Similarly here students, the four terms में the first is T1, second is T2, third is T3 and fourth is T4. No need to by heart it, just understand it. So in both the thing we are taking the second term as A. Second term को हमने A assume किया, कुछ भी assume कर सकते हैं. We can assume here the terms as A, B, C, X, Y, Z, M, N, P. But if we assume in that way, हम sum complete हमारा नहीं होगा. Time लगेगा थोड़ा like we can't solve the sum in an easy way. To solve the sum in an easy way, this is the method. We are going to assume this as the term. So we know that the difference between two terms, we term it as what? D. D is the difference between two terms in the AP. तो अब हम T2 से T3 के तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो we will add this common difference, that is A plus D. लेफ्ट साइड जाएंगे तो we will subtract this common difference A minus D. Hence we get the three consecutive terms in AP as A minus D, A and A plus D. Similarly, four terms. So T1, right side subtract D, A minus D. Third term, left side तो हम लोग subtract करेंगे. Third term we will add D, that is A plus D. अभी ये A plus D को फिर से plus D add करने का है. तो A plus D फिर से plus D add किया तो क्या होता है? D plus D is 2D. So we get here the fourth term as A plus 2D. Hence we get the four terms and three terms in AP. ऐसे टाइप के सम में wherever they are asking us to find three consecutive terms and four consecutive terms, we are going to assume this two terms only. Let us start with the seventh sum of the third exercise, 3.3 question number 7. Exercise 3.3 question number 7. Now what is given in the question? Question में क्या दिया है? Question में दिया है, in an AP the sum of three consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. So we are going to assume first. अभी यहाँ question में bracket के नीचे दिया है assume the three consecutive term as. Exam में नहीं दिया होता है तो तुमको ये याद रखना है. So we are going to assume let the three consecutive terms in AP be. Let the three consecutive terms in AP be. So what were the three terms? A minus D, comma A plus D. इसी sequence में लिखना है हमको. उसके बाद from first condition, we are going to use the conditions given in the question. So from first condition, what is the first condition given? The first condition given is the sum of three term is 27. Sum मतलब हम add करेंगे T1 plus T2 plus T3 equal to 27. Let us add this term. T1 is A minus D plus T2 is A plus T3 is A plus D equal to 27. Minus D plus D cancel.
What remains? A plus a plus a. A plus a plus a क्या होता है? 3a. 3a equal to 27. 3 is getting multiplied. उधर गया तो divide होगा. Therefore a is equal to 9. So we got the value of a. D का वैल्यू कैसे फाइंड करने का? We'll go for the second condition. From second condition. Now what is the second condition? In the second condition they are saying that if we multiply this term we get 504. Okay, so let us multiply. T1 multiplied to T2 multiplied. We have to multiply all the three numbers. Okay, T2 into T3 equals to 504. So let us substitute now. T1, what was T1? A minus D multiplied by T2, A multiplied by T3, A plus D equal to 504. Do we know the value of this small a? Yes, A का value मालूम है. तो हम क्या करेंगे मालूम है? नेक्स्ट स्टेप में a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. a के जगह पे उसका वैल्यू लिखेंगे. तो हमको स्टेप क्या मिलेगा? 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504. अभी ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है. उधर गया तो क्या होगा? डिवाइड होगा. तो ये बीच के 9 को उधर शिफ्ट करो. तो 9 उधर गया तो 504 से डिवाइड होगा. लेट अस डिवाइड. So what we get? 504 divided by 9. The answer is 9 5s are 45. I carry 9 6 are 54. And what we get here, this is in the form of a identity, right? Which identity? A minus B and A plus B. A minus B, A plus B. So we are going to convert this in the formula. What is the formula of A minus B and A plus B? It's A square minus B square. So we are going to write that in the next step. A square मतलब 9 square. So our next step is 9 square. A square मतलब 9 square minus B square मतलब D square. 9 square is 81 minus D square equal to 56. अब हमको D का वैल्यू फाइंड करना है ना. तो जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए. अब यहाँ D माइनस में है तो हम क्या करेंगे? हम D को वो साइड शिफ्ट करेंगे. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 56 को ये साइड लेके आओ. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी देयरफॉर 81 प्लस 56 इधर आया तो माइनस 56 माइनस डी स्क्वायर उधर गया तो प्लस डी स्क्वायर. सो हेंस 81 minus 56 is equal to 25. So we get therefore 25 equal to d square. Square taking square roots. To remove the square, the step is taking square roots on both the sides. So here square root of 25, square root of d square. इसको in easy way I tell as square को इधर लिखेंगे तो square root होता है. So we get d equal to root 25. So therefore d equal to square root of 25 students here. Every square root. अब यहाँ ना स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ मिस्टेक होता है उनसे. क्या गलती होता है? They write only 5. Okay. Now whenever if you are finding the root value of anything, see every root is having how many answer? 2 answer. Always remember that positive and negative. जब पॉजिटिव ये काम जब हम कर रहे हैं ना, किसी का भी रूट निकाल रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन में चेक कर लेने का कुछ कंडीशन दिया है क्या कि जो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर या फिर इट इज अ नेचुरल नंबर. ऐसा कुछ कंडीशन दिया होगा तो हम माइनस नहीं लेंगे. और अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है तो माइनस नहीं लेने का हमारे पास रीजन ही नहीं है. So we have to consider both the values. So there are many, I think this question was there in this year board exam and I myself have deducted marks for this part. मेरे ख्याल से 3 मार्क का सम था ये और मैंने ये पार्ट के लिए 1 मार्क्स पूरा कट कर दिया था. जिसने खाली d इक्वल टू 5 लिखा और सिर्फ d इक्वल टू 5 के हिसाब से टर्म फाइल किया उनको they got
तो उनका 1 मार्क इस सम में ये हो गया, मतलब उनको मेरे ख्याल से 1.5 मिला, नॉट 1 मार्क, 1.5, बिकॉज देर आर 2 आंसर ऑफ दिस सम, देर आर 2 सेट ऑफ आंसर्स, एंड अगर हमने इसमें माइनस नहीं लिया हमको 1 सेट ही मिलेगा, मतलब तुमको 3 का अप्रोक्सीमेटली पूरा बोलते हैं ना 50% मिलना चाहिए, मतलब 1.5 मार्क्स. So students, remember this: whenever you find the square root of anything, always you have to consider two things, positive and negative. पॉजिटिव नेगेटिव लेने से पहले एक बार क्वेश्चन हमेशा चेक करो, कुछ कंडीशन दिया है क्या हमको, यहाँ नहीं दिया है, इसके लिए हम लेंगे इधर के d इज इक्वल टू प्लस और -5. After taking d ka 2 values, we'll divide the page in 2 parts. We are going to find the terms now. Here a is equal to 9 and d equal to 5. Either a is equal to 9 and d is equal to -5. Let us find t1, that was a minus d, 9 minus 5, which is 4. Let us find t2, that was nothing but a, so that is the a ka value. Then t3, a plus d, 9 plus 5, that is 14. So here one set we get is 4, 9, 14. Second, here this side, t1 equal to a minus d, which is equal to a minus -5, that is a plus 5. a नहीं, sorry, a के जगह पे a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे, तो that is 9 plus 5, that is 14. ये फर्स्ट टर्म हो गया. T2 इज a, उसका वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू, फिर a plus d, that is 9 plus -5, plus into minus minus, 9 minus 5 is 4. So we got 2 set of answers. Therefore, the 3 consecutive terms in AP are our final answer. The 3 consecutive terms in AP are, क्या सेट मिला, दोनों सेट लिखने के हमको. फर्स्ट सेट इज 4, 9, 14. So we are going to write 4, 9, 14, और ये vice versa उल्टा है, 14, 9, 4. Our final answer. If you want to write, copy any step, you can let me know once I unmute you.